पर चीज टर्म्स फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स सपोज अगर बन एक्सप्रेशन 4x + 5 इस 4x + 5 एक्सप्रेशन यह बन दोन टर्मन इट्स मेड अप ऑफ टू टर्म्स अख 4x टर्म तो ब्या 5 टर्म अमुक मतलब गो टर्म्स एड कर टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन terms are added up to form an expression. So different terms if add up karo is using plus and minus operator, so we get an expression. For example, अगर बह टर्म निम सपोज 5y ब्याक निम ब्याक टर्म -6 यम ऐड कर बह क्या कर 5(1 + -6) यह कर सॉल्व यह बन 5y - 6 एक्सप्रेशन क्या बने 5(1 - 6) इस गर में यम टर्म यम कर ऐड इथे पे बह डिफरेंट टर्म्स क्या कर पान ऐड मे क्या बन तक एक्सप्रेशन मे बन तक डिफरेंट एक्सप्रेशन टर्म आव तो समझ वो थो शॉर्ट्स मज यह चीज याद यह प्लस तो माइनस कर सेपरेट टर्मन प्लस तो माइनस यह कर अंदाज लगे कि अकिस एक्सप्रेशन मज कत टर्म्स सपोज अगर बन 3x + 5y - 6 ये अगर वुच प्लस तो माइनस कर अलग अलग टर्मन गो प्लस यम पे योकुन गई टर्म प्लस तो माइनस मजबा गई 2 टर्म ब्या टर्म इथे पे माइनस यम गई ब्या गई 3 टर्म वो अगर वो ब्या चीज इस मे ये लिख 5y - 6 इस टर्म 5y यह बेसिकली 5 × y यह कांस्टेंट यह वेरिएबल अत वन प्रोडक्ट टर्म क्या वन प्रोडक्ट टर्म दिस कॉल्ड प्रोडक्ट टर्म यह 5 ये कांस्टेंट बेस y एज वेरिएबल इथे पे बह लिख सपोज 3 बह सपोज लिखित x y - 6 यथ मज यह टर्म इट्स ए प्रोडक्ट टर्म यह बने ये मज दोन प्रोडक्ट वेरिएबल पान कोर मल्टीप्लाई x × y सो इट्स आल्सो ए प्रोडक्ट टर्म ये वुच बह यथ मज टर्म मज 5 × y इस 5 न्यूमेरिक वैल्यू कांस्टेंट ये वन यह पे वेरिएबल अत वन इट्स द कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल यह वेरिएबल कोफिशिएंट ब्या चीज इथे पे वन बह ये अमुक मतलब गो इस प्रोडक्ट टर्म 5y अच्छे पान फैक्टर्स गो इस प्रोडक्ट टर्म अत मज फैक्टर अत मज 5 बे y इथे पे टर्म x y इट्स ए प्रोडक्ट टर्म मेड अप ऑफ 2 फैक्टर्स ये मज फैक्टर x ब्या y दोनों वेरिएबल इथे पे जान बह सपोज बह निम ब्या एक्सप्रेशन 7x y - 5x यह एक्सप्रेशन यह बने कजन टर्मन दोन टर्मन टर्म 7x y ब्या टर्म -5x यह टर्म यह प्रोडक्ट टर्म यह बने 7, x, y गो अत मज कज फैक्टर 3 7 बे x बे y इथे पे यह टर्म ये मज 2 फैक्टर -5 बे x इट्स ए प्रोडक्ट टर्म यम दोनों प्रोडक्ट टर्म this is a product term and this is a product term, so this product term is made up of 3 one that means one constant and 2 variables, so it forms a product term that means there are 3 factors 1 7 constant x and y as variables प्रोडक्ट टर्म मज वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स तमन वन फैक्टर्स ऑफ दैट टर्म दैट द फैक्टर्स ऑफ दैट टर्म ब्या कोफिशिएंट वोन मे ये अगर 7x y 7 न्यूमेरिक वैल्यू यह दोन वेरिएबल कोफिशिएंट न्यूमेरिक कोफिशिएंट -5x सो यह वेरिएबल अत ये कांस्टेंट इट इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल, so -5 is the coefficient of x, 7 is the coefficient of xy, 7 is the coefficient of xy. Which is a classification करें common expression classification of expressions based on the number of terms. वो करो एक्सप्रेशन क्लासिफाई कत पे नंबर ऑफ टर्म्स कत एक्सप्रेशन मज कत टर्म्स तथ क्या नाव दिमो गोडुक मोनोमियल मोनोमियल गए स एक्सप्रेशन यथ मज ओनली वन टर्म आसान
यथ में सिर्फ अकई टर्म आस तथ वन मोनोमियल यानी an expression that contains only one term is called a monomial. For example, 3x 5 minus x या minus 7 3xy minus 6xyz, these are all monomials. Single term, single term, single term, single term, single term, and single term. Second is binomial. Bi means mono means 1 and bi means 2. Binomial means an expression which contains two terms. Yath mans the term asan tach is one binomial. For example, 3x plus 5, 2x minus y. Binomial means expression that contain two terms are called binomial expressions. For example, 3x minus 5, 2x minus y. Say we can write x minus suppose 5. These are x plus 5 different expressions. These all are made up of two terms, hence we call them binomials. One term, second term, one term and second term, first term and second term. So expressions that are made up of two terms are called binomials. Expressions that are made up of a single term or only one term are called monomials. Then third one is trinomial. Expressions that are made up of three terms are called trinomials. For example, 3x plus 2y minus 5. We write basically them as suppose 3x square plus x minus 6. This is the best example of this trinomial. Or we can also write then a plus b plus c. This is a trinomial expression made up of three different terms a, b and c. These are all variables. Then fourth one in general we can say polynomial. Polynomial. Polynomial means an expression having one or more terms. One or more terms. So monomial, binomial, trinomial, these are all in general called polynomials. So polynomial means an expression which has only which can be either we can have only one term or we can have more than one terms. That means an polynomial can have a single term, it can have two terms, it can have three terms, it can be made up of 4, 5, 6, so on up to nth terms. So in general all these monomial, binomial, trinomials, etc. they are called polynomial. So monomial equals classification kath pattern number of terms ki kath expressions mans kuz term asan tath che temi hisab karan naw. We say gaine sa expression yath mans akui term as tath wana is monomial. Path hekki ase this agar wuchu is 3x each product term each banamas 3 the x's 3 is the coefficient of x 5 constant it is a monomial an expression minus x it's an expression minus 7 is an expression 3xy it is a monomial because it is made up of a single term agar minus plus mazbag ase til bane ye til banha this kare decide til kuz term kyunki ye product term. So product term it is made up of 3x and y, so it's a monomial. Yath mans te agar wuchu is minus 6 x y and z but product terms. This is a product term. Minus 6 x y z kya che chi product to ish banawa sir ek product term. Chi they are connected with the help of this multiplication operator. So minus 6 is the coefficient of x, y and z. Minus 6 is the coefficient of x, y and z. 3 is the coefficient of x, y. 3 is the coefficient of x here. Binomial means an expressions which contain two terms. For example, 3x minus 5. Gailis term karan is connect yimo operators plus to minus se. Oman jib tache is bana kya? The term is connect karo kis plus ya minus ethan tache bana is binomial. 2x minus y.
x plus 5 गई जो टर्म सो बाइनोमियल ट्राइनोमियल मतलब गो ये मज 3 टर्म 3x plus 2y minus 5 3x square plus x minus 6 a plus b plus c. These are different examples of trinomials. The polynomial mean in general chase human survey mana pat polynomial pat that polynomial gas expression yat maj chaide ak expression ay 2 asan 3 asan 4 asan 7 asan taman chase generally wana survey kya pat wana polynomials इन पत वो क्या पी गई फिलहाल आज इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत ये मज वो मे ये कि गोड वेरिएबल क्या गो कांस्टेंट क्या गो एक्सप्रेशन क्या गई पत वो मे ये मज टर्म्स क्या गए फैक्टर्स क्या गए कोफिशिएंट्स क्या गए उनके टर्म्स सेपरेट गसान कम सत प्लस तो माइनस सत डिफरेंट टर्म्स ये एडअप करो तब बन एक्सप्रेशन पे प्रोडक्ट टर्म तथ मज डिफरेंट वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स तुम इन प्रोडक्ट सर कनेक्ट सो तुम पे वन फैक्टर्स ये 5 y इट्स प्रोडक्ट टर्म 5 and y आर द फैक्टर्स 6 is in itself a factor so इधर पे 5 it is also called the coefficient of y इधर पे उनमें x तो y ये प्रोडक्ट टर्म सो ये मज फैक्टर कुस x तो y कोफिशिएंट क्या ये क्या तेल थवान पे 1 पे वो बता इधर पे ब्या 7xy minus 5x यह दोन टर्मन बन सो पे 7xy ब्या minus 5x तो 7xy क्या प्रोडक्ट टर्म ये वो x तो y क्या वेरिएबल उमन वेरिएबल अमिक कोफिशिएंट 7 7 x तो y दोनवन हूँ कोफिशिएंट minus 5 is the coefficient of x पे कर क्लासिफिकेशन कत पे कि नंबर ऑफ टर्म्स कि एक्सप्रेशन अत मज कत टर्म्स तम हिसाब से कर क्लासिफिकेशन तुम एक्सप्रेशन इन मज अक टर्म तथ वन मोनोमियल एग्जाम्पल मे दिज तुम एक्सप्रेशन इन मन 2 टर्म तुम वन बाइनोमियल्स तो तुम एक्सप्रेशन इन मन 3 टर्म तुम वन ट्राइनोमियल्स पोलोनोमियल गई इन जनरल पे तथ मज टर्म या 2 या 3 या 4 10 20 10 पे जनरली सर्वे वन पोलोनोमियल यह अजुक टॉपिक तो सुबह पो अम ब्रोह इंशाल्लाह करो वो कंटिन्यूस पे होप कि तुम यह समझ अगर कंस कह प्रॉब्लम सह कर मेस व्हाट्सएप नंबरस पे मैसेज सह हेकन बह अम मजीद अंडरस्टैंड कर अच्छा अस्सलाम वालेकुम।